A very good morning to all of you. In previous class, we have discussed about. Okay, good morning. Everybody mute yourself. In previous class, we have discussed about the algebra. Okay, we have discussed about the coefficient, numerical coefficient. Today, we will discuss about algebraic expression. Mute yourself whenever you face problem, then you unmute and ask me. Everybody mute yourself. Otherwise, I will mute all of you. At first, you mute yourself and listen me. See, what is algebraic expression? Okay, already this chapter taught. Algebraic expression is a combination of numbers and literal numbers. Literal numbers also I have discussed the alphabets, or we can say the letters with fundamental operations is called an algebraic expression. Okay. And what is algebraic expression? Algebraic expression means the combination of literal numbers. We know literal numbers mean letters. Okay, letters we can say X, Y, Z, A, B, C, D. Okay, all alphabets with fundamental operations. Fundamental operations, you know, addition, subtraction, multiplication and division. Those which are mathematical operations are called fundamental operations. It's called an algebraic expression. Okay, no need to write the definition, or are you interested to write down the definition? सुनो, आप लोग इसका डेफिनेशन लिखना है या फिर नहीं? ऑलरेडी लिख चुके हो? कोई सुन रहा है कि नहीं? आपको ये डेफिनेशन लिखना है ना? ऑलरेडी लिख चुके हो? लिखना है? ओके ओके ओके, राइट डाउन. Yes, yes. You write down. What is algebraic expression? A combination. Write down. A combination of numbers, literal numbers. Ma'am, your video is not coming. Not visible. हाँ? Ma'am, what is visible? Not clear. एक मिनट. It's not visible. Ma'am, board is visible. Now it is visible. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Now you see? Okay. Now it is visible. A combination. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, can you cite? हाँ. Can you? Combination of numbers, literal numbers and fundamental operations. Ma'am, your video is not
on my screen. फंडामेंटल, अब देखो फंडामेंटल ऑपरेशंस इज कॉल्ड एन algebraic expression. Ma'am, your video is not coming to me. हाँ? Ma'am, I is saying your video is not coming. Not coming. और बाकी आपके पास नहीं आ रहा है, और बाकी के सबके पास आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप एक बार अपना मोबाइल का थोड़ा सेटअप देख लीजिए, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है यहाँ से। नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो हो सकता है। सुनो, अब नाउ यू लिसन। व्हाट इज algebraic expression? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। इसमें तीन चीज का कॉम्बिनेशन है। एक है आपका नंबर्स, फर्स्ट वन इज नंबर, सेकंड वन इज लिटरल नंबर्स, और वी कैन से द लेटर्स, एंड थर्ड वन इज द फंडामेंटल ऑपरेशंस। वहाँ पे आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे चीज रहेगा, तीन चीज रहेगा। सपोज फॉर एग्जांपल I have written 3x plus 2. Okay, any two examples हम ले रहे हैं। 5x square plus 2b square minus 3. Okay, these are two examples of the algebraic expression. Write down. देखो, this is the combination of numbers, number भी है और literals भी है और fundamental operation कौन है? Plus. Okay, that's why this is called an algebraic expression. Here you see, this is the literals, this is also literals, this is the fundamental operation and this is the number. तीनों का combination को हम बोलते हैं algebraic expression. Everybody clear about the algebraic expression? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, like terms and unlike terms. Next, we will see the terms of the algebraic expression. सुनो. Next is the terms of the algebraic expression. टर्म्स किसको कहते हैं? टर्म्स हो गया पार्ट्स ऑफ द algebraic expression. मैम टर्म्स भी लिखना है। मैम टर्म्स भी लिखना है। पार्ट्स ऑफ द मैम algebraic expression. टर्म्स होता है, टर्म्स नहीं होता। Write down terms of algebraic expression. You write down terms of algebraic expression. तो terms किससे? पार्ट्स ऑफ द algebraic expression. इसमें एक एक पार्ट को हम कहेंगे कि टर्म्स है। इसमें कितना टर्म्स है? 3x plus 2. How many terms are there? 3x plus 2. How many terms are there? ये पहला एग्जांपल देखो, 3x plus 2. How many terms are there? 3x one term and 2 is other term. Yes or no? How many terms are there in this 3x plus 2? किसी को पता नहीं है क्या? Are you listening me? How many terms are there in 3x plus 2? I'm done. What done? Utkarsh Kumar. How many terms in 3x plus 2? I have circled the expression 3x plus 2. Two terms are there in 3x plus 2. Ma'am, two terms. हाँ, two terms. One Ma'am, is two terms. 3x, other is 2. Ma'am, Okay, these are the terms. See, in this expression, 3x one term and 2 is another term. In this second
video is not clear. हाँ वीडियो इज क्लियर बेटा, जूम करके देखो। Ma'am, video is clear. क्लियर है? Ma'am, video is clear. No, ma'am, not clear. मैम आपका रेट दिखा रहा है। हाँ मैम वीडियो is clear. हाँ वीडियो तो क्लियर है। मैम yes मैम। क्लियर है कि नहीं? मैम उसको और क्लियर नहीं है मैम, जूम था तो क्लियर था। मैम हाँ अब देखो, yes मैम। आप भी अपना Yes, मोबाइल ma'am, में clear जूम हो नहीं कर गया। सकते हैं? Yes मैम। हाँ तो करके देखो ना। तो देखो इसमें क्या Yes, ma'am, है? blur आ रहा है। 3x plus 2 3x into 5 square plus 2 square minus 3. The 5 square one term, second term is 2b square, third term is minus 3. Okay. Now everybody clear about the terms of the algebraic expression? सारे लोग क्लियर हो गए कि नहीं? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Shall I rub this one? मैम बहुत साउंड हो रहा है। हाँ तो इसीलिए I will mute all of you. Okay. My video is not. Now I have muted all of you. If you are facing any problem, you can raise your hand. Okay. You see and write down everybody whatever written here. Now it is clear about the terms of the algebraic expression, and at first what is algebraic expression. Then I have given some examples. I think everybody clear about that. Next one is terms of algebraic expression. Terms means parts of algebraic expression. Okay. Parts of algebraic expression separated by the symbol plus, minus, into and division are called the terms of the algebraic expression. Here some examples I have given. 3x plus 2. What are the terms? 3x and 2. And second one has written on the board 5a square plus 2b square minus 3. Okay. Then here how many terms are there? 3 terms, that is 5a square, 2b square and 3. या फिर minus 3 you can write down. Okay. Now if you have completed, then I will rub this one. Anshu Raj, you have some problem, and Utkarsh Meher, Aditi Kumari. मैम ये दोनों में से एग्जाम्पल कौन सा है टर्म्स का? दोनों जगह पे आई हैव रिटन. आप कोई भी एक लिख लो. 3x plus 2 का ये टर्म्स लिखिए. 3x2 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए भी ये एग्जांपल लिखिए. इसके नीचे भी आप इसको लिख सकते हैं. 3x one term and 2 is other term. 5a square plus 2b square minus 3, 5a square, 2b square और 3 या फिर minus 3. Okay, these are 3 terms using for this algebraic expression. Now everybody clear about that? Archit, Anubhav, if you have problem ask me. I have unmuted you. Okay. मैम योर वीडियो इज नॉट टू मी। हाँ वीडियो क्लियर है बेटा. आप थोड़ा सा अपना देख लीजिए नेटवर्क का कनेक्शन वगैरह. और बेटा इसका तो मैं फोटो ले लेती हूँ, स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा. बट वीडियो क्लियर है बेटा. ओके. आप इसको CW वर्क में आई विल सेंड यू इन स्नैप होमवर्क एंड व्हाट्सएप ग्रुप. Now if you have completed, shall I rub this one? Completed? Archit, completed? अर्चित लिख रहे हैं कि नहीं? Shall I rub this one? Ma'am, your video is
is not available to me. Yes ma'am, done, completed ma'am, very good. Okay, now I am rubbing this. Now you see like terms and unlike terms. Then next is like terms, and second one is unlike terms. हम like terms किससे कहते हैं और unlike terms किससे कहते हैं? Okay, terms having the same variable are called like terms. Same variable, terms having same variable. Like this, suppose 7x 1/2x minus 4x. These are all called 7x 1/2x minus 4x are examples of like terms. Okay, and second one is unlike terms. Terms having different variables. Terms having different variables. For example, आपका unlike terms minus 7x 3y 9x square 2z like this. See, having different variable here x, y, x square, z. Okay, these are called unlike terms. और same variable देखो here x, here also x, x. Okay, उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 7 हो सकता है, but its definition says terms having same variable. You should focus on the variable. Variable if same, then we can say these are like terms. If variables are different, then we can say unlike terms. Okay, everybody clear about the like terms and unlike terms? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Next. Monomial, binomial. Shall I rub this one? If you have completed, shall I rub this one? Yes, ma'am. Okay. Now, name of expression. How many expressions? Here we how many types of algebraic expressions? We know how many times. Okay. Name of expression. At first, if the number of terms is equal to 1, if number of terms is 1, okay, then we can say what is the name of the expression? Tell me. Monomial. What we are telling? Monomial. You have to remember what is monomial? The expression in which the number of terms is 1, we can say monomial. Okay, for example, suppose 3x या फिर 1 या फिर -5x like this. So many examples you can give. Here only one term is there, 3x. One here one term. 5x is also one term. That's why these are called monomials. Okay, everybody clear about the monomial? Yes or no? Tell me. क्या लिखे हैं? हाँ? This is A के बाद we can say
name of expression. Okay, first one, if number of terms is 1, then we can say monomial. Okay, then you give some examples of monomial. 3x 1 minus 5x, like this you give some examples. Okay, if number of terms is 2, दो term का, if the number of terms is 2, दो term का जब algebraic expression आता है, what we are saying, what is its name, we can say binomial. Okay, जब दो term आ जाता है, जैसे कि for example 3x plus 9 minus 9x plus 5. Okay, like this. How many terms are there in this expression? 2 terms, that is 3x and 9. That's why it is called one binomial. Here also minus 9x plus 5. How many terms are there? 2 terms, minus 9x and 5. So we can say its name is binomial. What is its name of the expression? Its name is binomial. Okay, everybody clear about that? Monomial and binomial? Clear? Yes or no? Nobody is saying nothing. What happened to all of you? I have unmuted all of you. Tell me, have you any problem? Ma'am. No. Yes, ma'am, we are clear. Okay, very good. Okay, now if the number of terms is 3, shall I write this one now? Yes, ma'am. Okay, now you write down 3. Monomial, binomial. Then if the number of terms is 3, what we can say this type of expression is binomial के बाद क्या आता है? Trinomial. क्योंकि 3 expression होता है, 3 terms होता है in one expression. That's why it is called trinomial. Suppose for example 2a minus 3b plus 9. See how many terms are there? 3. 2a, one term, 3b, second term, this is third term, 1, 2, 3. There are 3 terms, that's why it is called trinomial. Then, if the number of terms is 4, if the number of terms is 4 in any expression, then we can say, what is its name of the expression? It is called quadrinomial. Okay, it is called quadrinomial. It is called quadrinomial. For example, x minus 2y plus 3z plus 2. See how many terms are there? 1, 2, 3 and 4. If the number of terms in any expression is 4, then we can say what type name of the expression? Quadrinomial expression. And if the number of terms is 3, we can say it is trinomial. If the number of terms is 2, we can say binomial. If the number of terms is 1, then we can say monomial. Okay, everybody should remember what is monomial, what is binomial, trinomial and quadrinomial. Okay, everybody clear about that? Yes, ma'am. Okay, now
By using these things means what is algebraic expression, what are the terms of algebraic expression, what are like terms, what are unlike terms, and the type of expression like monomial, binomial, trinomial and quadrinomial. We will do the worksheet 4. Okay. Now write down the worksheet 4. एंड दीज ये जो डेफिनेशन अभी मैंने बताई ये सब फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा. अब बढ़िया से इसको याद रखिएगा डेफिनेशन सारे. ओके. नाउ वी विल डू द वर्कशीट 4. सेपरेट द टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें से आप टर्म्स को अलग अलग करना है. ओके. 1a. हु विल से? एनीवन? How we can separate the terms from this algebraic expression? Anshu, are you there? कोई नहीं बताएगा? If anyone wants to give the answer, yes or no? I have unmuted all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why you are not telling? Yes, ma'am. Okay. Tell me, Yes, ma'am. one of you tell me, what are the terms of the question number 1a? This expression is given x square minus 2xy plus y square. Okay. X square minus 2xy and y square. X का power 2 minus 2xy, comma y का power 2. Terms are x square, give one comma, then minus 2xy, put comma here, then y Ma'am, square. comma, Like y this का you power have 2. to do. Okay. मैम क्या लिखा? हाँ? मैम आर के पहले मैम आपने क्या लिखा है? Terms मैम आर के पहले आपने क्या लिखा है? Terms are लिखे हैं. Terms are x square minus 2xy y square. Okay. Like this you have to do all these things. I have done here f. 1 का f मैंने बताया तो 2x comma minus 3y square comma then 1 by 5 x square. Next one is minus 2 by 3y. Okay. Like this you have to write down the terms of the algebraic expression. I think everybody clear about the question number 1 or any doubt in question number 1 ask me. Question No, number ma'am. No. No doubt. Okay. Now मैम clear. question number 2. देखो question Okay. In question number 2, classify each of the following as monomial, binomial, trinomial or quadrinomial expression. Who will say first one x plus y? What is this? Is it a binomial, trinomial, monomial? X plus y? Trinomial. Yes. Ma'am, trinomial. Ma'am, binomial. Ma'am, क्योंकि हमने x plus y बोल दिया था. Binomial. Then हमने 2 part हो गया. 3. Only Ma'am, two 3 is monomial. Binomial. B में एक Monomial. monomial. Trinomial. In C it is Ma'am, trinomial. trinomial. Like this you have to do. इसमें भी कोई doubts नहीं. Question number 2 में have you any doubt? Ma'am, board is not clear.
No, ma'am. Board is not clear. No, ma'am. Not clear. Ma'am, board is not clear. देखो Board is clear. बोर्ड तो क्लियर है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वन इज बाइनोमियल, सेकंड वन इज मोनोमियल, one terms is given c a square plus 2ab plus b square, three terms are there, that is trinomial. Like this you have to do. Ma'am, D monomial. Excuse me, ma'am. हाँ मैम अगर टर्म 4 से ज्यादा रहेगा तो क्या कहेंगे उसको? वो तो आपका मल्टीनोमियल होगा, उससे ज्यादा होगा तो आपको देगा नहीं, अभी जितना पढ़ाई हुआ है उतना ही देगा। ओके ओके मैम। अभी 4 टर्म तक आपको दिया है, उतना ही तक आपको क्वेश्चन में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब 2 से कोई क्वेश्चन, अब 2 से कोई डाउट नहीं? मैम हाँ हो जाएगा। मैम हाँ पूछो। मैम थर्ड टर्म वाले को पोनोमियल बोलते हैं ना? पोनोमियल या फिर मल्टीनोमियल ज्यादा होगा ना, आप मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं। ये सब गूगल में आपको मिल सकता है, उसके आगे वाला को क्या क्या बोलता है। ठीक है अब इसको मिटाएं। मैम हाँ पूछो। मैम डी का क्या होगा? डी में आपका मोनोमियल, डी का होगा मोनोमियल। मैम मोनोमियल होगा। मैम डी का मोनोमियल। हाँ डी मोनोमियल। और एनी क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2? नो मैम क्लियर है। क्लियर है? क्लियर। ओके हम लोग डी का बताइए मैम। डी का हाँ सी ओके इज 4x plus 3y plus 2x is a trinomial expression. 4x plus 2y plus 2x, देखो यहाँ पे तो अभी आपको दिखा रहा है कि ये ट्राइनोमियल है, बट यहाँ पे देखो लाइन टर्म्स आर देयर। 4x plus 2x is equal to, मैम ये बाइनोमियल होगा। हाँ इज इक्वल टू, ये दोनों जो है ये एड हो जाएगा बिकॉज these two are like terms. Okay, that's why this is 6x plus 2y. So it is not a trinomial. It has only 2 terms. Write down. It is not a trinomial. Why? Because it has only 2 terms. Okay. हाँ like terms. ग्रुप होगा। हाँ ग्रुप पे कुछ पूछ रहे हैं? बोल। Have you doubt in question number 3? हो गया ना? अब ना हाँ अब now question number 4, identify like terms in the following. यहाँ क्या है? Like terms means same variables. Okay? Question number 4. See, identify the like terms in the following. X square, y square, तो इसमें x square, मैम then 1 by 2x square. These are two like terms. Okay? समझ में आ रहा है? Question number 4, same variable should be there in like terms. Okay? Then B. B in like मैम terms. 3 का नाम क्या था? मैम इट इज नॉट अ ट्रिनोमियल बिकॉज इट हैज only two terms because it has only 2 terms. Okay मैम। Okay. Now in question number 4 you see x square
1/2x² because these are same variable है कि नहीं? x² same variable, so we can say x² 1/2x² are like terms. Okay? Next in B में कौन मिलेगा? P, next 4P. These are like terms. Then C में आपको -2AB, then 3BA, ये भी like terms होगा. AB BA बेटा सेम है. ओके. Then D में देखो x² yz, x² y² z, x² yz, x² yz, और सेम टर्म आपका इधर दिया है -4y(x²z). देखो अब आपको कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में? किसी को कोई डाउट? नो मैम. हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 4? यस मैम. ओके. मैम अभी मैम इज इट. अब इसको लिख लीजिए 4. हाँ? और क्वेश्चन नंबर 5. मैम अभी रेज मत करिए 4 को. मैं 4 नहीं मिटा रही हूँ बेटा, हम 2 मिटा रही हूँ. अब क्वेश्चन नंबर 5 में से राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच टर्म्स आर. देखो अब टर्म्स दिया हुआ है, आपको खाली लिखना है 2a plus 3b minus 2c, then b 4x² y minus 2xy² minus 3, then c x minus y minus j minus 3. These are the algebraic expressions. Everybody clear about question number 5? 5 में आपको टर्म्स दिया हुआ है, आपको algebraic expression लिखना है. 6 नंबर हो जाएगा. हाँ? मैम फिर बाइनोमियल मैम का 2 एग्जांपल देना है बस. हाँ, वो तो एग्जाम्पल आप खुद लिख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम्पल आप अपने मन से लिख सकते हैं. Who has raised your hand? Already I muted all of you. If you face any problem, you ask me. किसको क्या प्रॉब्लम है बताओ? अभी तक का जितना पढ़ाई हुआ इसमें क्या डाउट्स है अगर पूछो. कोई डाउट्स है? हाँ. मैम मुझे 4 का भी नहीं समझ में आया. 4 का बी में देखो ना बेटा, लाइक टर्म्स दिया है P3Q. क्वेश्चन बुक में देखो, बुक में क्या लिखा हुआ है? P3Q R 4P. तो इसमें से आपको लाइक टर्म्स देखना है. लाइक टर्म मतलब आपका सेम वेरिएबल, एक जैसा वेरिएबल कहाँ पे है? एक है P, दूसरा है 4P, और तो बाकी तो सब Q R दिया हुआ है बेटा.